विवेकचूडामणि नंदितानि दिगंतानि यस्य आनंदाम्बुविन्दुना पूर्णानंदं प्रभुं वंदे स्व आनंदेक स्वरूपिणम्। मंगलाचरण सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। ये ब्रह्मनिष्ठा का महत्व। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद्वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वमस्मात् परम। आत्मा नात्म विवेचनम स्व अनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिर्नो शतजन्म कोटिसु कृतये पुण्यैर्विना लभ्यते। 2 दुर्लभम त्रयमेवैतद्देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। 3 लब्ध्वा कथंचिन्नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम् यस्त्वात्ममुक्तौ न यथेत मूढ़धियः स ह्यात्महास्वं विनिहन्त्य सद्ग्रहात्। 4 इतः को न्वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभम मानुष्यम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। 5 वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन विनापि मुक्तिर् न सिद्ध्यति ब्रह्मशतान्तरेपि। 6 अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेनेत्येव हि श्रुतिः ब्रवीति कर्मणो मुक्तेर् हेतुत्वं स्फुटं यतः। 7 ज्ञानोपलब्धि का उपाय। अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान् सन्न्यस्त बाह्यार्थ सुखस्पृह सन् संतं महांतं समुपेत्य देशिकं तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। 8 उद्धरेदात्मना आत्मानं मग्नं संसारवारिद्धौ योगारूढ़त्वमासाद्य सम्यक् दर्शननिष्ठया। 9 सन्न्यस्य सर्वकर्माणि भवबन्धविमुक्तये यत्यताम् पंडितैर्धीरैरात्माभ्यास उपस्थितैः। 10 चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किंचित् कर्म कोटिभिः। 11 सम्यग् विचारतः सिद्धा रज्जुतत्वावधारणा भ्रांत्योदित महासर्प भयदुःख विनाशिनी। 12 अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन वा। 13 अधिकारी निरूपण अधिकारिणमाशास्ते फलसिद्धिर्विशेषतः उपायादेशकालाद्याः सन्त्यस्मिन् सहकारिणः। 14 अतो विचारः कर्तव्यो जिज्ञासोरात्मवस्तुनः समासाद्य दया सिन्धुं गुरुं ब्रह्मविदुत्तमम्। 15 मेधावी पुरुषो विद्वानुहापोह विचक्षणः अधिकार्यात्मविद्याया मुक्तलक्षणलक्षितः। 16 विवेकिनो विरक्तस्य शमादिगुणशालिनः मुमुक्षोरेव हि ब्रह्मजिज्ञासा योग्यता मता। 17 साधन चतुष्टय साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यद्भावेन सिद्ध्यति। 18 आदौ नित्यानित्यवस्तु विवेक परिगण्यते इहामुत्र फल भोग विरागस्त दणन्तरम्। 19 क्षमादिषट्क संपत्ति मुमुक्षुत्वमिति स्फुटम् ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्येति एवं रूपो विनिश्चयः। 20 सोयम नित्यानित्यवस्तु विवेकः समुदाहृतः तद्वैराग्यम जुगुप्सा या दर्शनश्रवणादिभिः। 21 देहादि ब्रह्म पर्यन्ते ह्यनित्ये भोगवस्तुनि विरज्य विषयव्राताद् दोष दृष्ट्या मुहुर्मुहुः। 22 स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः शम उच्यते विषयेभ्यः परावर्त्य स्थापनं स्वस्वगोलके। 23 उभयेषामिन्द्रियाणां सदमः परिकीर्तितः बाह्यानालम्बनं वृत्तेरेषो प्रतिरुत्तमा। 24 सहनं सर्वदुःखानां प्रतीकारपूर्वकं चिंता विलापरहितं सा तितिक्षा निगद्यते। 25 शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यवधारणं सा श्रद्धा कथिता सद्भिर् यया वस्तुपलभ्यते। 26 सर्वदा स्थापनं बुद्धेः शुद्ध ब्रह्मणि सर्वदा तत्समाधानमित्युक्तं नन्न तु चित्तस्य लालनं। 27 अहंकारादिदेहान्ता न बन्धान ज्ञानकल्पितान् स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुमिच्छा मुमुक्षुता। 28 मंदमध्यमरूपापि वैराग्येण शमादिना प्रसादेन गुरोः सेयं प्रवृद्धा सूयते फलम्। 29 वैराग्यं च मुमुक्षुत्वं तीव्रं यस्य तु विद्यते तस्मिन्नेवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः शमादयः। 30 एतयोर्मन्दता यत्र विरक्तत्व
मुमुक्षयोः मरौ सलिलवत्तत्र क्षमादेर्भाणमात्रता। 31 मोक्ष कारण सामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। 32 स्वत्मतत्वानुसंधानम भक्तिरित्यपरे जग्गु। गुरुस्पत्ति और प्रश्न विधि उक्त साधन संपन्नस्त त्वजिज्ञासुरात्मनः। 33 उपसीदेद गुरुं प्राज्ञं यस्माद् बंध विमोक्षणम श्रोत्रियो वृजनो कामहतो यो ब्रह्मवित्तमः। 34 ब्रह्मण्युपरतः शांतो निरिंधन इवानलः अहेतुक दया सिंधुर्बंधुरानम ताम सताम। 35 तमाराध्य गुरुं भक्त्या प्रह्व प्रश्रय सेवनैः प्रसन्नम तमनुप्राप्य पृच्छेद्ज्ञातव्यमात्मनः। 36 स्वामिन्नमस्ते नतलोकबंधो कारुण्य सिंधो पतितं भवाब्धो मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्ट्या आज्व्याति कारुण्य सुधाभिवृष्ट्या। 37 दुर्वार संसार दवाग्नितप्तं दोधूयमाणं दुर्दृष्टवातैः भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्यो शरण्यमन्यद्यदहं न जाने। 38 शांता महांतो निवसन्ति संतो वसंत वल्लोक हितं चरणतः तीर्णाः स्वयं भीम भवार्णवं जना न हेतुनान्य न पितारयन्तः। 39 अयं स्वभावः स्वत एव यत्पर श्रमापनोद प्रवणं महात्मनां सुधां सुरेश स्वयमर्क कर्कश प्रभाभितप्तामवतिक्षितिं किल। 40 ब्रह्मानंद रसानुभूतिकलितैः पूतैः सुशीतैः सितैः युष्मद्वाक्कलशोज्जितैः श्रुतिसुखैर्वाक्यामृतैः सेचय संतप्तं भवतापदावदहनज्वालाभिरेणं प्रभो धन्यास्ते भवदीक्षणक्षणगतेः पात्रीकृताः स्वीकृताः। 41 कथम तरेयं भवसिन्धुमेतं का वा गतिर्मे कतमोऽस्ति उपायः जाने न किंचित कृपया व मां भो संसार दुह कक्षति मातनुष्व। 42 उपदेश विधि तथा वदन्तं शरणागतं स्वं संसार दावाणलतापतप्तं निरीक्ष्य कारुण्य रसार्द्र दृष्ट्या दद्यादभीतिं सहसा महात्मा। 43 विद्वान सतस्मा उपसत्तिमीयुषे मुमुक्षवे साधु यथोक्तकारिणे प्रशांत चित्ताय शमान्विताय तत्वोपदेशं कृपयैव कुर्यात्। 44 श्री गुरुरुवाच मा भैष्ट विद्वंस तव नास्त्यपायः संसार सिन्धोस्तरणेऽस्त्युपायः येनैव याता यतयोऽस्य पारं तमेव मार्गं तव निर्दिशामि। 45 अस्त्युपायो महान् कश्चित् संसार भयनाशनः तेन तीर्त्वा भवाम्भोधिं परमानन्दमाप्स्यसि। 46 वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम् तेनात्यंतिक संसार दुःखनाशो भवत्यनु। 47 श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षो मुक्तेर्हेतून वक्ति साक्षात् श्रुतेर्गिह यो वा एतेष्वेव तिष्ठत्यमुष्य मोक्षो विद्याकल्पितात् देहबन्धात्। 48 अज्ञान योगात् परमात्मनस्त वह्यनात्मबन्धस्त त एव संसृतिः तयोर्विवेकोदित बोधवह्निः अज्ञान कार्यं प्रदहित मूलम्। 49 प्रश्न निरूपण शिष्य उवाच कृपया श्रूयतां स्वामिन् प्रश्नोऽयं क्रियते मया तदुत्तरमहं श्रुत्वा कृतार्थः स्यां भवन्मुखात्। 50 को नाम बन्धः कथमेष आगतः कथं प्रतिष्ठास्य कथं विमोक्षः को सावनात्मा परमः क आत्मा तयोर्विवेकः कथमेत दुच्यताम्। 51 श्री गुरुवाच धन्यो असि कृतकृत्यो असि पावितं ते कुलं त्वया पावितं यदविद्याबन्धमुक्त्या ब्रह्मी भवितुमिच्छसि। 52 रणमोचन कर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः बन्धमोचनकर्ता तु स्वस्मादन्यो न कश्चन। 53 मस्तकन्यस्तभारादेर्दुःखमन्यैर्निवार्यते क्षुद्धादिकृतदुःखं तु विना स्वेन न केनचित्। 54 पथ्यमौषधसेवा च क्रियते येन रोगिणा आरोग्यसिद्धिर्दृष्टास्य नान्यानुष्ठितकर्मणा। 55 वस्तु स्वरूपं स्फुटबोधचक्षुषा स्वेनैव वेद्यं न तु पण्डितेन चन्द्रस्वरूपं निजचक्षुषैव ध्यातव्यमन्यैरवगम्यते किम्। 56 अविद्याकाम कर्मादिपाशबन्धं विमोचितुं ख शक्नुयाद्विनात्मानं कल्पकोटिशतैर्पि। 57 आत्मज्ञान का महत्व न योगेन न सांख्ये न कर्मणानो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा। 58 वीणाया रूपसौन्दर्यं तंत्रीवादन सौष्ठवम् प्रजारंजनमात्रं तन्न साम्राज्याय कल्पते। 59 वाग्वय खरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्या न कौशलम
वैदुष्यम विदुषाम तद्वद्भुक्तये न तु मुक्तये। 60 अविज्ञाते परे तत्त्वे शास्त्रा धीतिस्तु निष्फला। विज्ञातेऽपि परे तत्त्वे शास्त्रा धीतिस्तु निष्फला। 61 शब्दजालम महारण्यम चित्तभ्रमण कारणम अतः प्रयत्नाज ध्यातव्यम तत्त्वध्यातत्वमात्मनः। 62 अज्ञान सर्पदष्टस्य ब्रह्मज्ञानौषधम विना किमु वेदैश्च शास्त्रैश्च किमु मंत्रैः किमौषधैः। 63 न गच्छति विनापाणं व्याधिरोषध शब्दतः विना परोक्षानुभवं ब्रह्म शब्दैर्न मुच्यते। 64 अकृत्वा दृश्य विलयमज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः बाह्य शब्दै कुतो मुक्तिरुक्तिमात्र फलैर्नृणाम्। 65 अकृत्वा शत्रु संहार मगत्वाखिल भूश्रियम राजा हमिति शब्दान्नो राजा भवितुमर्हति। 66 आप्तोक्तिं खननम तथोपरिशिलाद्युत्कर्षणं स्वीकृतिं निक्षेप संपेक्षते न हि बहिः शब्दैस्तु निर्गच्छत्। तद्वद् ब्रह्मविदोपदेशमनन् ध्यानादिभिर्लभ्यते मायाकार्यतिरोहितं स्वममलं तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः। 67 तस्मात् सर्वप्रयत्नेन भवबन्धविमुक्तये स्वैरेव यत्नः कर्तव्यो रोगादाविव पंडितैः। 68 यस्त्वयाद्यकृतः प्रश्नो वरीयाञ्छास्त्रविन्मतः सूत्रप्रायो निगूढार्थो ध्यातव्यश्च मुमुक्षुभिः। 69 मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु ततः शमश्चापि दमस्तितिक्षा न्यासः प्रसक्ताखिलकर्मणां भृशम्। 71 ततः श्रुतिस्तन्मननं सतत्व ध्यानं चिरं नित्यनिरन्तरं मुनेः ततो विकल्पं परमेत्य विद्वान् इहैव निर्वाण सुखं समृच्छति। 72 यद्बोद्धव्यं तवेदानीमात्मानात्म विवेचनं तदुच्यते मया सम्यक् श्रुत्वात्मन्यवधार्य। 73 स्थूल शरीर का वर्णन मज्जास्थिमेदः पलरक्तचर्म त्वगाह्वयैर्धातुभिरेभिरन्वितं पादोरुवक्षो भुजपृष्ठमस्तकैः अंगैरुपांगैरुपयुक्तमेतत्। 74 अहं ममेति प्रथितं शरीरं मोहास्पदं स्थूलमितीर्यते बुद्धैः नभो नभस्वद्दहनाम्बुभूमयः सूक्ष्मानि भूतानि भवन्ति तानि। 75 परस्परांशैर्मिलितानि भूत्वा तस्थूलानि च स्थूलशरीरहेतवः मात्रास्तदीया विषया भवन्ति शब्दादयः पंच सुखाय भोक्तुः। 76 य एषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा राघोरुपाशेण सुदुर्दमेन आयान्ति निर्यान्त्यध ऊर्ध्वमुच्चय स्वकर्मदूतेन जवेन नीताः। 77 विषये निंदा शब्दादिभ्य पंचभिरेव पंच पंचत्वमापु स्वगुणेन बद्धा कुरंगमातंगपतंगमीन भृंगा नरः पंचभिरंचितः किम। 78 दोषेण तीव्रो विषयः कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहन्ति भोक्तारं द्रष्टारं चक्षुषाप्य यम। 79 विषयाशामः पाशाद्यो विमुक्तः सुदुस्त्यजात् स एव कल्पते मुक्त्यै नान्यः षट्शास्त्रवेद्यपि। 80 आपातवैराग्यवतो मुमुक्षून् भवाब्धिपारं प्रतियातु मुद्यतान् आशाग्रहो मज्जयते अंतराले निगृह्य कंठे विनिवर्त्य वेगात्। 81 पाकी विषयाख्यग्रहो येन सुविरक्त्यसिना हतः स गच्छति भवाम्भोधेः पारं प्रत्युह वर्जितः। 82 विषम विषयमार्गैर्गच्छतो नच्छबुद्धेः प्रतिपदं भियातो मृत्युरप्येष विद्धि हित्सुजनगुरुक्त्या गच्छतः स्वस्य युक्त्या प्रभवति फलसिद्ध्यः सत्यमित्येव विद्धि। 83 मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्तित्यजाति दूराद्विषयान् विषम यथा पीयूषवत्तोषदय्याक्षमार्जव प्रशांतिदान्तीर्भज नित्यमादरात्। 84 देहासक्ति की निंदा अनुक्षणम यत्परिहृत्य कृत्यम अनाद्य विद्याकृतबंध मोक्षणम देह परार्थो यममुष्य पोषणे यह सज्जते सस्वमणेन हन्ति। 85 शरीर पोषणार्थी सन य आत्मानं दिदृक्षति ग्राहम दारुध्या धृत्वा नदीं तर्तुं स इच्छति। 86 मोह एव महामृत्यु रमुमुक्षोर्व पुरादिषु मोहो विनिर्जितो येन स मुक्तिपदमर्हति। 87 मोहं जहि महामृत्युं देहदारसुतादिषु यम जित्वा मुनयो यान्ति तद्विष्णोः परमं पदम्। 88 स्थूल शरीर दौत्वंग मांसरुधिरस्ना युमेदो मज्जास्थि संकुलम पूर्णं मूत्रपुरीषाभ्याम स्थूलम निन्द्यमिदं वपुः। 89 पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलं भोगायतनमात्मनः अवस्था जाग्रस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः
90 दिन बाह्येन्द्रियैः स्थूल पदार्थ सेवां स्रक्चन्दनस्त्र्य दिविचित्र रूपां करोति जीवः स्वयमेतदात्मना तस्मात् प्रशस्तिर्वपुषोऽस्य जागरे 91 सर्वोऽपि बाह्य संसारः पुरुषस्य यदाश्रयः विद्धि देहमिदं स्थूलं गृहवद्गृहमेधिनः 92 स्थूलस्य संभवजरामरणानि धर्माः स्थौल्यादयो बहुविधाः शिशुताद्यवस्था वर्णाश्रमादिनियमा बहुधा मयाः स्युः पूजावमान बहुमान मुखा विशेषा 93 10 इंद्रियां बुद्धीन्द्रियाणि श्रवणं त्वगक्षि घ्राणं च जिह्वा विषयावबोधनात् वाक्पाणिपादं गुदम्प्युपस्थ कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु 94 अंतःकरण चतुष्टय निगद्यते अंतःकरणं मनोधी अहंकृतिश्चित्तमिति स्ववृत्तिभिः मनस्तु संकल्प विकल्पनादिभिः बुद्धिः पदार्थाध्यवसाय धर्मतः 95 अत्राभिमानादहमित्यहंकृतिः स्वार्थानुसंधान गुणेन चित्तम् 96 पंचप्राण प्राणापानव्यानोदान समाना भवत्य 100 प्राणः स्वयमेव वृत्तिभेदाद्विकृतिभेदात्सु वर्णसलिलादिवत् 97 वागादिपंच श्रवणादिपंच प्राणादिपंचाभ्रमुखानि पंच बुद्ध्याद्य विद्यापि च कामकर्मणि पुर्यष्टकं सूक्ष्म शरीरमाहु 98 इदं शरीरं शृणु सूक्ष्म संजनितं लिंगम त्वपंचीकृतभूत संभवम सवासणं कर्म फलानुभावकं स्वाज्ञानतो नादिरुपाधिरात्मन 99 स्वप्नो भवत्यस्य विभक्त्यवस्था स्वमात्रशेषेण विभाति यत्र स्वप्ने तु बुद्धिः स्वयमेव जाग्रत् कालीन नानाविधवासनाभिः कर्त्रादिभावं प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं ज्योतिरयं परात्मा 100 धीमात्र कोपाधिर्शेष साक्षी न लिप्यते तत्कृतकर्मलेशैः यस्मादसंगस्तत एव कर्मभिः न लिप्यते किंचिदुपाधिना कृतैः 101 सर्वव्यापृतिकरणं लिंगमिदं स्याच्छिदात्मनः पुंसः वास्यादिकमिव तक्ष्णस्ते नैवात्मा भवत्य संगोयम् 102 अंधत्व मंदत्व पटुत्व धर्मा सौगुण्य वैगुण्य वशाद्धिचक्षुष बाधिर्य मूकत्व मुखास्थथैव श्रोत्रादि धर्मा न तु वेत्तुरात्मनः 103 प्राण के धर्म उच्छ्वास निश्वास विजृंभनक्षुत प्रस्पंदनाद्युत्क्रमणादिकाः क्रिया प्राणादिकर्माणि वदन्ति तज्ज्या प्राणस्य धर्मावशना पिपासे 104 अहंकार अंतःकरणमेतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि अहमित्यभिमानेन तिष्ठत्याभास तेजसा 105 अहंकारः सविज्ञेयः कर्ता भोक्ताभिमान्ययम् सत्त्वादिगुणयोगेन चावस्थात्रयमश्नुते 106 विषयाणामानुकूल्ये सुखी दुःखी विपर्यये सुखम दुःखम च तद्धर्म सदानंदस्य नात्मनः 107 प्रेम की आत्मार्थता आत्मार्थत्वेन ही प्रेयान विषयो न स्वतः प्रिय स्वत एव ही सर्वेषामात्मा प्रियतमो यतः 108 तत् आत्मा सदानंदो नास्य दुःखम कदाचन यत् सुषुप्तो निर्विषय आत्मानंदोनुभूयते श्रुतिः प्रत्यक्षमैतिह्यमनुमानं च जाग्रति किन्नो माया निरूपण अव्यक्त नाम्नि परमेश शक्तिः अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते 110 सन्नाप्य सन्नाप्युभयात्मिका नो भिन्नाप्य भिन्नाप्युभयात्मिका नो सांगाप्य नो महाद्भुता निर्वचनीय रूपा 111 शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनाश्या सर्प भ्रमो रज्जु विवेकतो यथा रजस्तमः सत्त्वमिति प्रसिद्धा गुणास्तदीया प्रथितैः स्वकार्यै 112 रजोगुण विक्षेप शक्ति रजस क्रियात्मिका यथ प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी रागादयोस्या प्रभवन्ति नित्यं दुःखादयो ये मनसो विकारा 113 कामः क्रोधो लोभदम्भाद्यसूया हंकारेर्ष्यामत्सराद्यास्तु घोराः धर्मा एते राजसाः पुं प्रवृत्तिर् यस्मादेशा तद्रजो बन्धहेतुः 114 एषा वृत्तिर्नाम तमोगुणस्य शक्तिर्यया वस्त्ववभासते अन्यथा सैषा निदानं पुरुषस्य संसृतेः विक्षेप शक्त्यः प्रवणस्य हेतुः 115 प्रज्ञावाणपि पंडितोपि चतुरोप्यत्यंत सूक्ष्मार्थ दृग् व्यालीढस्तं सा न वेत्ति बहुधा संबोधितोपि स्फुटं भ्रान्त्यारोपितमेव साधु कलयत्यालम्बते तद्गुणान् हन्तासो प्रबला दुरन्ततं सह शक्तिर्महत्यावृतिः 116
अभावना वा विपरीत भावना संभावना विप्रतिपत्तिरस्याः संसर्गयुक्तं न विमुञ्चति ध्रुवं विक्षेपशक्तिः क्षपयत्यजस्रम् 113 अज्ञानमालस्य जडत्वनिद्रा प्रमादमूढत्वमुखास्तमो गुणाः एतैः प्रयुक्तो न हि वेत्ति किंचित् निद्रालुवत्स्तंभवदेव तिष्ठति 118 सत्वगुण सत्वं विशुद्धं जलवत्तथापि ताभ्यां मिलित्वा सरणाय कल्पते यत्रात्मबिम्बः प्रतिबिम्बितः सन् प्रकाशयत्यर्क इवाखिलं जडम् 119 मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मास्त्वमानिताद्या नियमा यमाद्याः श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च दैवी च संपत्तिरसन्निवृत्ति 120 विशुद्ध सत्वस्य गुणाः प्रसादः स्वात्मानुभूतिः परमा प्रशान्ति तृप्ति प्रहर्ष परमात्मनिष्ठा यया सदानंद रसम समृच्छति 121 कारण शरीर अव्यक्तमेतत्त्रिगुणैर्निरुक्तं तत्कारणं नाम शरीरमात्मनः सुषुप्तिरेतस्य विभक्त्यवस्था प्रलीन सर्वेन्द्रिय बुद्धिवृत्तिः 122 सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांतिः बीजात्मनावस्थितिरेव बुद्धिः सुषुप्तिरेतस्य किल प्रतीतिः किंचिन्न वेदमीति जगत प्रसिद्धेः 123 अनात्मनिरूपण देहेन्द्रिय प्राणमनोहमादयः सर्वे विकारा विषयाः सुखादयः व्योमादिभूतान्यखिलं च विश्वम् अव्यक्तपर्यन्तमिदं ह्यणात्मा 124 माया कार्यं सर्वं महदादिदेहपर्यन्तम् असदिदं नात्मतत्त्वं विद्दित्वं मरुमरीचिका कल्पम् 125 आत्मनिरूपण अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः यद्विज्ञाय नरो बन्धान्मुक्तः कैवल्यमश्नुते 126 अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यमहं प्रत्ययलम्बनः अवस्थात्रय साक्षी सन् पंचकोशविलक्षणः 127 यो विजानाति सकलं जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावमभावमहमित्ययम् 128 यह पश्यति स्वयं सर्वं यं न पश्यति कश्चन यश्चेतयति बुद्ध्यादिं न तद्यं चेतयत्ययम् 129 येन विश्वमिदं व्याप्तं यं न व्याप्नोति किंचन आभारूपमिदं सर्वं यं भान्तमनुभात्ययम् 130 यस्य सन्निधिमात्रेण देहेन्द्रियमनोधियः विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव 131 अहंकारादिदेहान्ता विषयाश्च सुखादयः वेद्यन्ते घटवद्येन नित्यबोधस्वरूपिणा 132 एषोऽन्तरात्मा पुरुषः पुराणो निरन्तराखण्ड सुखानुभूतिः सदैकरूपः प्रतिबोधमात्रो येनेशिता वागसवश्चरन्ति 133 अत्रैव सत्त्वात्मनिधिगुहायां अव्याकृताकाश उरुप्रकाशः आकाश उच्चय रविवत् प्रकाशते स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन् 134 झाता मनोहंकृति विक्रियाणां देहेन्द्रिय प्राणकृतक्रियाणां अयोगनिवत्ताननुवर्तमानो न चेष्टते नो विकरोति किंचन 135 न जायते नो म्रियते न वर्धते न क्षीयते नो विकरोति नित्यः विलीयमानेऽपि वपुष्यमुष्मिन् न लीयते कुंभ इवांबरम स्वयं 136 ई प्रकृति विकृति भिन्नः शुद्धबोधस्व भावः सदसदिदं शेषं भासयन् निर्विशेषः विलस्ति परमात्मा जाग्रदादिष्वस्था स्वहमहमिति साक्षात् साक्षिरूपेण बुद्धेः 137 नियमितमनसामुं त्वं स्वमात्मानमात्म न्ययमहमिति साक्षाद्विद्य बुद्धि प्रसादात् जनिमरण तरंगापार संसार सिंधुं प्रतर्भव कृतार्थो ब्रह्मरूपेण संस्थः 138 अध्यास अत्रानात्मन्यहमिति मतिर्बन्ध एषोऽस्य पुंसव प्राप्तो ज्ञानाज्जनन मरणक्लेश संपात हेतुः येनैवायं वपुरिदं सत्सत्यमित्यात्मबुद्ध्या पुष्यत्युक्षत्यवती विषयस्तन्तुभिः कोशकृद्वत् 139 अतस्मिंस्तद्बुद्धिः प्रभवति विमूढस्य तमसा विवेकाभावाद्वै स्फुरति भुजगे रज्जुधिषणा ततो नर्थव्रातो निपतति समादातुरधिकः ततो यो सद्ग्रा ह स हि भवति बन्धः शृणु सखे 140 अखंड नित्या द्वयबोध शक्त्या स्फुरन्तमात्मा नमनंत वैभवम् समावृणोत्यावृत्तिशक्तिरेषा तमोमयी राहुरिवार्कबिम्ब एम 141 तिरोभूते स्वात्मन्यमल्तर तेजोवति पुमान् अनात्मानं मोहादहमिति शरीरं कलयति सान्ततः कामक्रोध प्रभृतिभिरमुं बंधन गुणे परम विक्षेपाख्या रजस उरुशक्तिर्व्यथयति 142
महामोहग्राहग्रसनगलितात्मावगमनो धियोनानावस्था स्वयं भिनयंस्तद्गुणतया अपारे संसारे विषय विषपूरे जलनिधौ निमज्योन्मज्जायम भ्रमति कुमतिः कुत्सित गति 143 भानुप्रभा संजनिता भ्रपंक्ति भानु तिरोधाय विजृंभते यथा आत्मोदिताहंकृतिरात्म तत्वम तथा तिरोधाय विजृंभते स्वयं 144 आवरण एवं विक्षेप शक्तियां कवलित दिननाथे दुर्दिने सांद्र मेघय व्यथयति हिम झंझा वायुरुग्रो यथैतान अविरततम सात्मन्यावृत मूढ़ बुद्धिम क्षपयति बहुदुः खैस्तीव्र विक्षेप शक्तिः 145 एताभ्यामेव शक्तिभ्यां बंध पुंस समागतः याभ्यां विमोहितो देहम मथवा आत्मानं भ्रमत्ययम् 146 बंध निरूपण बीजम संसृति भूमिजस्य तु तमो देहात्मधीरंकुरो रागः पल्लवमंबु कर्म तु वपु स्कंधोऽसवः शाखिकाः अग्राणीन्द्रिय संहतिश्च विषयाः पुष्पाणि दुःखं फलम् नाना कर्म समुद्भवम बहुविधम भोक्तात्र जीवः खगः 147 अज्ञानमूलो यमनात्मबंधो नैसर्गिको नादिर्नंत ईरितः जन्माप्ययव्याधि जरादि दुःख प्रवाहपातम जनयत्यमुष्य 148 आत्मानात्म विवेक नास्त्रैर्ण शस्त्रैरणिलेन वहनिना छेत्तुम न शक्यो न च कर्मकोटिभिः विवेक विज्ञान महासिना विना धातुः प्रसादेन शितेन मंजुना 149 श्रुति प्रमाणैकमतेः स्वधर्मनिष्ठा तय्यैवात्म विशुद्धिरस्य विशुद्ध बुद्धेः परमात्म वेदनम नैव संसार समूलनाशः 150 कोशैरण्यमयाद्यः पंचभिरात्मा न संवृतो भाति निज शक्ति समुत्पन्नय शैवाल्पटलैरिवाम्बुवापीस्थम 151 तच्छैवालापनय्ये सम्यक् सलिलं प्रतीयते शुद्धम तृष्णा संतापहरम सद्यः सौख्यप्रदम परम पुंसः 152 पंचानांपि कोशानांपवादे विभात्ययं शुद्ध नित्यानंदैकरसः प्रत्यग्रूपः परः स्वयं ज्योतिः 153 आत्मानात्म विवेकः कर्तव्यो बंधमुक्तये विदुषा तेनैवानंदी भवति स्वं विज्ञाय सच्चिदानंदम 154 मुञ्जादिशिकामिव दृश्य वर्गात् प्रत्य अंशमात्मानम संगम क्रियम विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वम तदात्मना तिष्ठति यः समुक्तः 155 अन्नमय कोश देहोयमन्न भवनोन्नमयस्तु कोशश चान्नेन जीवति विनश्यति तद्विहीनः त्वक्चर्ममांसरुधिरास्थि पुरीशराशिर नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः 156 पूर्वं जनेरपि मृतेरपि नायमस्ति जातः क्षणं क्षणगुणो नियतस्वभावः नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः स्वात्मा कथं भवति भावविकारवेत्ता 157 अब पाणिपादादिमान् देहोनात्मा व्यंगेऽपि जीवनात् तत्तच्छक्तेरणाशाच्च न नियम्यो नियामकः 158 अद्य देह तद्धर्म तत्कर्म तदवस्थादिसाक्षिणः स्वत एव स्वतः सिद्धम तद्वयलक्षण्यमात्मनः 159 कुल्यराशिर्मांसलिप्तो मलपूर्णोतिकश्मलः कथं भवेदयं वेत्ता स्वयमेतद्विलक्षणः 160 त्वङ्मांसमेदोऽस्ति पुरीशराशा वहं मतिं मूढजनः करोति विलक्षणं वेत्ति विचारशीलो निजस्वरूपं परमार्थभूतम् 161 देहोहमित्येव जडस्य बुद्धि देहे च जीवे विदुषस्त्वहन्धिः विवेक विज्ञानवतो महात्मनो ब्रह्माहमित्ये व मतिः सदात्मनि 162 अत्रात्मबुद्धिं त्यज मूढबुद्धे त्वङ्मांसमेदोऽस्ति पुरीशराशौ सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कुरुष्व शांतिं परमां भजस्व 163 देहेन्द्रियादावसति भ्रमोदितां विद्वान् हन्तां न जहाति यावत् तावन्न तस्या स्ति विमुक्तिवार्ता प्यस्त्वेष वेदांत नयांतदर्शी 164 छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यत्स्वप्न देहे हृदि कल्पितांगे यथात्म बुद्धिस्तव नास्ति काचि जीव शरीरे च तथैव मास्तु 165 देहात्म धीरे व नृणाम सद्धियां जन्मा दिदुःख प्रभवस्य बीजम यतस्ततस्त्वं जहितां प्रयत्ना अतो त्यक्ते तु चित्ते न पुनर्भवाशा 166 प्राणमय कोश कर्मेन्द्रियै पंचभिरंचितोऽयं प्राणो भवेत् प्राणमयस्तु कोशः येनात्मवानन्नमयोऽनुपूर्णः प्रवर्तते सौ सकलक्रियासु 167 नैवात्मापि प्राणमयो वायुविकारो गणता गणता वायुवदंतर्बहिरेश
यस्मात् किंचित् क्वापि न वेत्तीष्टमनिष्टं स्वं वाण्यं वा किंचन नित्यं परतंत्रः। 168 मनोमय कोश ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमयः स्यात् कोशो ममाहमिति वस्तु विकल्प हेतुः संज्ञादिभेदकलना कलितो बलियांस्तत्पूर्वकोशं भिपूर्य विजृंभते। यह 169 पंचेन्द्रियः पंचभिरेव होतृभिः प्रचीयमानो विषयाज्ञ धारया जाज्वल्यमानो बहुवासनेन्धनैः मनोमयाग्निर्दहति प्रपंचम। 170 न ह्यस्त्य विद्या मनसोतिरिक्ता मनो ह्यविद्या भवबंध हेतु तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टं विजृंभितेऽस्मिन् सकलं विजृंभते। 151 स्वप्नेऽर्थ शून्ये सृजति स्वशक्त्या भोक्त्रादिविश्वं मन एव सर्वं तथैव जाग्रत्य पिनो विशेष तत्सर्वमेतन्मनसो विजृंभणम्। 172 सुषुप्तिकाले मनसि प्रलीने नैवास्ति किंचित् सकल प्रसिद्धेः अतो मनः कल्पित एव पुंसः संसार एतस्य न वस्तुतोस्ति। 173 वायुना नीयते मेघः पुनस्ते नैव नीयते मनसा कल्प्यते बंधो मोक्षस्ते नैव कल्प्यते। 174 देहादि सर्व विषये परिकल्प्य रागम बध्नाति तेन पुरुषं पशुवद्गुणेन वैरस्यमत्र विश्वत् सुविधाय पश्चाद एनं विमोचयति तन्मन एव बंधात्। 175 तस्मान्मनः कारणमस्य जन्तोः बन्धस्य मोक्षस्य च वा विधाने बन्धस्य हेतुर्मलिनं रजोगुणैः मोक्षस्य शुद्धं विरजस्तमस्कम्। 176 विवेक वैराग्य गुणातिरेका क्षुद्धत्वमासाद्य मनोविमुक्त्यै भवत्यतो बुद्धिमतो मुमुक्षो स्ताभ्यां दृढ़ाभ्यां भवितव्यमग्रे। 177 मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्य भूमिषु चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षवः। 178 मनः प्रसूते विषयान् शेषान् स्थूलात्मना सूक्ष्मतया च भोक्तुः शरीरवर्णाश्रम जातिभेदान् गुणक्रिया हेतुफलानि नित्यम्। 179 असंगचिद्रूपममु विमोह्य देहेन्द्रिय प्राणगुणैर्निबध्य अहं ममेति भ्रमयत्यजस्रं मनः स्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु। 180 अध्यासदोषात् पुरुषस्य संसृतिः अध्यासबन्धस्त्वमुनैव कल्पितः रजस्तमोदोषवतो विवेकिनो जन्मादिदुःखस्य निदानमेतत्। 181 अतः प्राहुर्मणो विद्यां पंडितास्थ अत्वदर्शिनः येनैव भ्राम्यते विश्वं वायुनेवा भ्रमण्डलम्। 182 तन्मनः शोधनं कार्यं प्रयत्नेन मुमुक्षुणा विशुद्ध सति चैतस्मिन् मुक्ति कर फलायते। 183 मोक्षैकसक्त्या विषयेषुरागम निर्मूल्य सन्न्यस्य च सर्वकर्म सच्छ्रद्धया यः श्रवणादिनिष्ठो रजः स्वभावं सधुनोति बुद्ध्यः। 184 मनोमयोनापि भवेत् परात्मा ह्याद्यन्तवत्वात् परिणामि भावात् दुःखात्मकत्वाद् विषयत्व हेतोः दृष्टा ही दृश्यात्मतया न दृष्टः। अद 185 कन विज्ञानमय कोश बुद्धिर्बुद्धीन्द्रियः सार्धं सवृत्तिः कर्तृलक्षणः विज्ञानमय कोशः स्यात् पुंसः संसार कारणम्। 186 अनुव्रजच्चित् प्रतिबिंब शक्ति विज्ञान संजः प्रकृतिर्विकार ज्ञान क्रियावानहमित्यजस्रम् देहेन्द्रियादिष्वभिमन्यते भृशम्। 187 अनादिकालो यमहं स्वभावो जीव समस्त व्यवहार वोड़ा करोति कर्माण्यपि पूर्ववासनः पुण्यान्य पुण्यानि च तत्फलानि। 188 भुङ्क्ते विचित्रास्वपि योनिषु व्रजन् नायाति निर्यात्यधः ऊर्ध्वमेष अस्यै व विज्ञानमयस्य जाग्रत् स्वप्नाद्यवस्था सुखदुःख भोगः। 179 देहादिनिष्ठाश्रम धर्म कर्म गुणाभिमानः सततं ममेति विज्ञानकोशोऽयमति प्रकाशः प्रकृष्ट सान्निध्य वशात्परात्मनः अतो भवत्येष उपाधिरस्य यदात्मधीः संसरति भ्रमेण। 190 आत्मा की उपाधि से असंगता योयम विज्ञानमयः प्राणेषु हृदि स्फुरत्स्व यञ्ज्योतिः कूटस्थ सन्नात्मा कर्ता भोक्ता भवत्युपाधिस्थः। 191 स्वयं परिच्छेदमुपेत्य बुद्धिः तादात्म्य दोषेण परम मृषात्मनः सर्वात्मक सन्नपि वीक्षते स्वयं स्वतः पृथक्त्वेन मृदो घटानिव। 192 उपाधिसंबन्धवशात्परात्मा ह्युपाधि धर्माननुभाति तद्गुणः अय्यो विकाराण विकारिवः निवत् सदैकरूपोऽपि परः स्वभावात्। 193 शिष्य उवाच
भ्रमेणाप्यन्यथा वास्तु जीवभाव परात्मनः तदुपाधेर्नादित्वान् नानादेर्नाश इष्यते 194 अतोस्य जीवभावोऽपि नित्या भवति संसृतिः न निवृतेत तन्मोक्षः कथम में श्रीगुरो वध 195 आत्मज्ञान ही मुक्ति का उपाय है। श्री गुरुरुवाच सम्यक पृष्टम त्वया विद्वंसावधानेन तच्छृणु प्रामाणिकी न भवति भ्रांत्या मोहित कल्पना 196 भ्रांतिम विना त्वसंगस्य निष्क्रियस्य निराकृतेः न घटेतार्थ संबंधो नभसो नीलतादिवत् 197 स्वस्य द्रष्टुर्निर्गुणस्याक्रियस्य प्रत्यग्बोधानंद रूपस्य बुद्धेः भ्रांत्या प्राप्तो जीवभावो न सत्यो मोहापाये नास्त्य वस्तु स्वभावात् 198 यावद् भ्रांतिस्तावदेवास्य सत्ता मिथ्या ज्ञानोज्जृंभितस्य प्रमादात् रज्ज्वां सर्पो भ्रांतिकालीन एव भ्रांतेर्नाशे नैव सर्पोऽपि तद्वत् 199 अनादित्वं विद्यायाः कार्यस्यापि तथेष्यते उत्पन्नायां तु विद्यायामाविद्यकमनाद्यपि 200 प्रबोधे स्वप्नवत् सर्वं सहमूलं विनश्यति अनाद्यपीदं नो नित्यं प्रागभाव इव स्फुटम् 201 अनादेरपि विध्वं सह प्रागभावस्य वीक्षितः यद्बुद्ध्युपाधिसम्बन्धात् परिकल्पितमात् मणि 202 जीवत्वं न ततोऽन्यत्तु स्वरूपेण विलक्षणः सम्बन्धस्त्वात्मनो बुद्ध्या मिथ्याज्ञानपुरःसरः 203 विनिवृत्तिर्भवेत्तस्य सम्यग्ज्ञानेन नान्यथा ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानं सम्यग्ज्ञानं श्रुतेर्मतम् 204 तदात्मानात्मनो सम्यग्विवेकेनैव सिद्ध्यति ततो विवेकः कर्तव्यः प्रत्यगात्मा सदात्मनो 205 जलं पंकवदत्यन्तं पंकापाये जलं स्फुटम् यथा भाति तथात्मापि दोषाभावे स्फुटप्रभः 206 असन्निवृत्तौ तु सदात्मना स्फुटं प्रतीतिरेतस्य भवेत् प्रतीचः ततो निरासः करणीय एव असदात्मनः साध्वहमादिवस्तुनः 207 अतो नायं परात्मा स्याद्विज्ञानमय शब्दभाक् विकारित्वात् जडत्वाच्च परिच्छिन्नत्वहेतुतः दृश्यत्वाद्व्यभिचारित्वान्ना नित्यो नित्य इष्यते 208 आनंदमय कोश आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनुर्वृत्तिस्तम ओजृंभिता स्यादानंदमयः प्रियादिगुणकः स्वेष्टार्थलाभोदयः पुण्यस्यानुभवे विभाति कृतिनामानंदरूपः स्वयं भूत्वा नंदति यत्र साधु तनुभृन्मात्रः प्रयत्नं विना 209 आनंदमय कोशस्य सुषुप्तो स्फूर्तिरुत्कटा स्वप्नजाग्रयोरीशदिष्ट संदर्शनादिना 210 नैवायमानंदमयः परात्मा सोपाधिकत्वात् प्रकृतेर्विकारात् कार्यत्व हेतोः सुकृतक्रियाया विकारसंघात समाहितत्वात् 211 पंचानांपि कोशाणां निषेधे युक्तितः श्रुतेः तन्निषेधावधि साक्षी बोधरूपो वशिष्यते 212 योऽयमात्मा स्वयं ज्योतिः पंचकोश विलक्षणः अवस्थात्रय साक्षी सन्निर्विकारो निरंजनः सदानंदः स विज्ञेयः स्वात्मत्वेन विपश्चिता 213 आत्मस्वरूप विषयक प्रश्न शिष्य उवाच मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु कोशेष्वेतेषु पंचसु सर्वाभावं विना किंचिन्न पश्याम्यत्र हे गुरो विज्ञेयं किमु वस्त्वस्ति स्वात्मनात्र विपश्चिता 214 श्री गुरुरुवाच सत्यमुक्तं त्वया विद्वन्निपुणोऽसि विचारणे अहमादिविकारास्ते तद्भावोऽयम्प्यणु 215 सर्वे येनानुभूयन्ते यः स्वयं नानुभूयते तमात्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्या सुसूक्ष्मया 216 तत्साक्षिकं भवेत्तद्यद्यद्येनानुभूयते कस्याप्यननुभूतार्थे साक्षित्वं नोपयुज्यते 217 असौ स्वसाक्षिको भावो यतः स्वेनानुभूयते अतः परं स्वयं साक्षात् प्रत्यगात्मा न चेत्रः 218 जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरं योऽसौ समुज्जृम्भते प्रत्यग्रूपतया सदाहं हमित्यन्तः स्फुरन्नैकधा नानाकारविकार भागिन इमान् पश्यन्नहन्धिमुखान् नित्यानंद चिदात्मना स्फुरतितं विद्धि स्वमेतं हृदि 219 घटोदके बिंबित मर्कबिंब मालोक्य मूढ़ो रविमेव मन्यते तथा चिदाभासमुपाधि संस्थम भ्रांत्या हमित्येव जड़ोभिमन्यते 220 देवा घटम जलम तद्गतमर्कबिंबं विहाय सर्वं विनिरीक्ष्य तेर्कः तटस्थ एतत्रितयावभासकः स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा तथा 221
देहं धियं चित्प्रतिबिम्बमेतं विसृज्य बुद्धौ निहितं गुहायां द्रष्टारमात्मानं खण्डबोधं सर्वप्रकाशं सदसद्विलक्षणं 222 नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मम् अंतर्बहिः शून्यमनन्यमात्मनः विज्ञाय सम्यक् निजरूपमेतत् पुमान् विपाप्मा विरजो विमृत्युः 223 विशोकानंद घनो विपश्चित् स्वयं कुतश्चिन्न बिभेति कश्चित् नान्योस्ति पंथा भवबंध मुक्तेः विना स्वतत्वा वगमं मुमुक्षो 224 ब्रह्मा भिन्नत्व विज्ञानम भव मोक्षस्य कारणम येनाद्वितीयमानंदम ब्रह्म संपद्यते बुद्धय 225 ब्रह्मभूतस्तु संसृत्य विद्वान्ना वर्तते पुनः विज्ञातव्यमतः सम्यग् ब्रह्मा भिन्नत्वमात्मनः 226 सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म विशुद्धं परम स्वतः सिद्धं नित्यानंदयकरसं प्रत्यगभिन्नं निरंतरम जयति 287 वैद ब्रह्म और जगत की एकता सदिदं परमाद्वैतम स्वस्मादन्यस्य वस्तुनो भावात् न ह्यन्यदस्ति किंचित सम्यक परमार्थतत्त्वबोधे हि 228 यदिदं सकलं विश्वं नानारूपं प्रतीतमज्ञानात् तत्सर्वं ब्रह्मैव प्रत्यस्ताशेष भावना दोषं 229 मृत्कार्यभूतोऽपि मृदो न भिन्नः कुंभोऽस्ति सर्वत्र तु मृत्स्वरूपात् न कुंभरूपं पृथगस्ति कुंभः कुतो मृषा कल्पितनाम मात्रः 230 केनापि मृद्भिन्नतया स्वरूपं घटस्य संदर्शयितुं न शक्यते अतो घटकल्पित एव मोहान् मृदेव सत्यं परमार्थभूतं 231 सद्ब्रह्मकार्यं सकलं सदैव तन्मात्रमेतन्न ततो अन्यदस्ति अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहो विनिर्गतो निद्रितवत् प्रजल्पः 232 औ ब्रह्मैवेदं विश्वमित्येव वाणी श्रौति ब्रूते थर्वनिष्ठा वरिष्ठा तस्मादेतद्ब्रह्ममात्रं हि विश्वं नाधिष्ठानाद्भिन्नतारोपितस्य 233 सत्यं यदि स्याज्जगदेतदात्मनो नन्तत्व हानिर्निगमा प्रमाणता असत्यवादित्वं पीशितुः स्यान् नैतत्त्रयं साधुहितं महात्मनां 234 ईश्वरो वस्तुतत्त्वज्ञो न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानीत्येवमेव व्यचीक्लिपत् 235 यदि सत्यं भवेद् विश्वं सुषुप्तावुपलभ्यतां यन्नोपलभ्यते किंचिदतो सत्स्वप्नवन्मृषा 236 अतः पृथंग नास्ति जगत्परात्मनः पृथक् प्रतीतिस्तु मृषा गुणादिवत् आरोपितस्यास्ति किमर्थवत्ता धिष्ठानमाभाति तथा भ्रमेण 237 भ्रान्तस्य यद्यद् भ्रमतः प्रतीतं ब्रह्मैव तत्तद्रजतं हि शुक्ति इदन्त्या ब्रह्म सदैव रूप्यते त्वारोपितं ब्रह्मणि नाम मात्रं 238 ब्रह्म निरूपण अतः परम ब्रह्म सदद्वितीयं विशुद्ध विज्ञान घनम निरंजनम प्रशांतमाद्यंत विहीनमक्रियम निरंतरानंद रसस्वरूपम 239 निरस्तमायाकृत सर्वभेदम नित्यं सुखम निष्कलं प्रमेयम अरूपम व्यक्तमनाख्यमव्ययम ज्योतिः स्वयं किंचिदिदं चकास्ति 240 जातृज्ञेय ज्ञान शून्यमनंतं निर्विकल्पकम केवलाखंड चिन्मात्रम परंतत्वम विदुर्बुद्धाः 241 अहेयमनुपादेयं मनोवाचामगोचरम अप्रमेयम नाद्यंतं ब्रह्मपूर्णं महन्मः 242 तत्त्वं पदाभ्यां विधीयमानयोः ब्रह्मात्मनोः शोधितयोर्यदीत्थं श्रुत्या तयोस्तत्त्वमसीति सम्यग् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः 243 ऐक्यं तयोर्लक्षितयोर्न वाच्ययोः निगद्यते अन्योन्यविरुद्धधर्मिणोः खद्योत्तभान्वोरिव राजभृत्ययोः कूपाम्बुराश्योः परमाणुमेर्वोः 244 तयोर्विरोधोऽयमुपाधिकल्पितो न वास्तव कश्चिदुपाधिरेशः ईशस्य माया महदादिकारणं जीवस्य कार्यं शृणु पंचकोशं 245 एतावुपाधि परजीवयोस्तयो सम्यङ् निरासे न परो न जीवः राज्यं नरेन्द्रस्य भटस्य खेटक स्तयोर्पोहे न भट्टो न राजा 246 अथात आदेश इति श्रुति स्वयं निषेधति ब्रह्मणि कल्पितं द्वयं श्रुति प्रमाणानुगृहीतयुक्त्या तयोर्निरासः करणीय एव 247 नेदं नेदं कल्पितत्वान्न सत्यं रज्जो दृष्टव्यालवत् स्वप्नवच्च इत्थं दृश्यं साधुयुक्त्या व्यपोह्य झेयः पश्चादेकभावस्तयोर्यः 248 ततस्तु तो लक्षणया सुलक्ष्यौ तयोरखण्डये करसत्वसिद्धये नालं जहत्या न तथा जहत्या
किंतु भयार्थात्मिकयैव भाव्यम 249 सदेव दत्तोऽयमितिह चैकता विरुद्ध धर्मांशं पास्य कथ्यते यथा तथा तत्त्वमसीति वाक्ये विरुद्ध धर्मानुभयत्र हित्वा 250 संलक्ष्य चिन्मा त्रतया सदात्मनोः अखंड भावः परिचीयते बुद्धयः एवं महावाक्यशतेन कथ्यते ब्रह्मात्मनोरैक्यम अखंड भावः 251 अस्थूलमित्ये तदसन्निरस्य सिद्धं स्वतो व्योमवद प्रतर्क्यम् अतो मृषामात्रमिदं प्रतीतं जहीहि यत्स्वात्मतया गृहीतं ब्रह्माहमित्येव विशुद्धबुद्ध्या विद्यस्वमात्मनमखण्डबोधं 252 मृत्कार्यं सकलं घटादिसततं मृण्मात्रमेवाभितः तद्वत्सज्जनितं सदात्मकमिदं सन्मात्रमेवाखिलं यस्मान्नास्ति सतः परं किमपि तत्सत्यं स आत्मा स्वयं तस्मात्तत्त्वमसि प्रशान्तममलं ब्रह्माद्वयं यत्परं 253 निद्रा कल्पित देश काल विषय ज्ञात्रादि सर्वं यथा मिथ्या तद्वदिहापि जाग्रति जगत् स्वाज्ञानकार्यत्वतः यस्मादेवमिदं शरीर करण प्राणाहमाद्यप्य सत् तस्मात्तत्त्वमसि प्रशांत ममलं ब्रह्माद्वयं यत्परं 254 यत्र भ्रान्त्या कल्पितं तद्विवेके तत्तन्मात्रं नैव तस्माद्विभिन्नं स्वप्ने नष्टं स्वप्नविश्वं विचित्रं स्वस्माद्भिन्नं किन्नु दृष्टं प्रबोधे 254 इनाऊं जातिनीति कुलगोत्र दूर्गम नाम रूप गुण दोष वर्जितम देश काल विषयातिवर्ति यद् ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि 255 यत्परम सकल वाग गोचरम गोचरम विमल बोध चक्षुषः शुद्ध चिद घनमनादि वस्तु यद् ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि 256 षड्भिरूर्मिभिरयोगि योगि हृद भावितं न करणैर्विभावितं बुद्ध्यवेद्यमनवद्य भूति यद् ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि 257 भ्रांतिकल्पित जगत कलाश्रयं स्वाश्रयं च सदसद्विलक्षणं निष्कलं निरुपमानं रिद्धिमत् यद् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि 258 जन्म वृद्धि परिणत्य पक्षय व्याधिनाशन विहीनमव्ययम् विश्वसृष्ट्यवन घात कारणं ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि 259 अस्तभेदमन्पास्त लक्षणं निस्तरंग जलराशि निश्चलम नित्य मुक्तम विभक्त मूर्ति यद् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि 260 एकमेव सदनेक कारणं कारणांतर निरास कारणं कार्यकारण विलक्षणं स्वयं ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि 261 निर्विकल्पकम अनल्पमक्षरम यत्क्षराक्षर विलक्षणं परम नित्यमव्यय सुखम निरंजनम ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि 262 यद्विभाति सदनेकधा भ्रमान्नाम रूप गुण विक्रियात्मना हेमवत् स्वयं विक्रियम सदा ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि 263 यचकास्त्यन परम परात्परम प्रत्यगेकर समात्मलक्षणम सत्यचित सुखमणंतम व्ययम ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि 264 उक्तमर्थमिममात्मनि स्वयं भाव्य प्रथित युक्तिभिर्धिया संशयादिरहितं कराम्बुवत् तेन तत्व निगमो भविष्यति 265 स्वं बोधमात्रं परिशुद्ध तत्त्वं विज्ञाय संघे नृपवच्च सैन्ये तदात्मनैवात्मनि सर्वदा स्थितो विलापय ब्रह्मणि दृश्य जातम 266 बुद्धौ गुहायां सदसद्विलक्षणं ब्रह्मास्ति सत्यं परम द्वितीयं तदात्मना योत्र वसेद गुहाया पुनर्न तस्या अंग गुहा प्रवेशः 267 जहाते वस्तुन्यपि बलवती वासनानादिरेषा कर्ता भोक्ताप्यहमिति दृढ़ायास्य संसार हेतु प्रत्यक दृष्ट्यात्मनि निवसता सापणेया प्रयत्नान् मुक्तिं प्राहुस्तदिह मुनयो वासनातानवं यत् 268 अहम ममेति यो भावो देहाक्षादावनात्मनि अध्यासोऽयं निरस्तव्यो विदुषा स्वात्मनिष्ठया 269 ध्यात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं बुद्धितद्वृत्तिसाक्षिणं सोहमित्येव सद्वृत्त्यानात्मन्यात्ममतिं जहि 270 लोकानुवर्तनं त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनं शास्त्रानुवर्तनं त्यक्त्वा स्वाध्यासापणयं कुरु 271 लोकवासनया जंतो शास्त्रवासनयापि च देहवासनया ज्ञानं यथावन्नैव जायते 272 संसार कारागृहमोक्षमिच्छो रयोमयं पादनिबद्ध श्रृंखलं वदन्ति तज्जाः पटुवासनात्रयं योऽस्माद्विमुक्तः समुपैति मुक्तिं 273 जलादिसंपर्कवशात् प्रभूत
दुर्गंधधूता गरुदिव्यवासना संघर्षणेनैव विभाति सम्य ग्विधूयमाने सति बाह्य गंधे 274। अंतः श्रितानंत दुरंत वासना धूलि विलिप्ता परमात्म वासना प्रज्ञाति संघर्षणतो विशुद्धा प्रतीयते चंद नगंधवत् स्फुटा 275। अनात्म वासना जालय स्थिरोभूतात्म वासना नित्यात्म निष्ठया तेषां नाशे भाति स्वयं स्फुटा 276। यथा यथा प्रत्यगवस्थितं मनः तथा तथा मुंचति बाह्य वासना निःशेष मोक्षे सति वासनानाम् आत्मानुभूतिः प्रतिबंध शून्या 277। स्वात्मन्येव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिनः वासनानां क्षयश्चातः स्वाध्यासापणयं कुरु 278। तमोद्वाभ्यां रजसत्वात् सत्वं शुद्धेन नश्यति तस्मात् सत्वं वष्टभ्य स्वाध्यासापणयं कुरु 279। प्रारब्धं पुष्यतिव पुरिति निश्चित्य निश्चलः धैर्यमालम्ब्ययत्नेन स्वाध्यासापणयं कुरु 280। नाहं जीवः परं ब्रह्मेत्यतद्व्यावृत्तिपूर्वकम् वासना वेगतः प्राप्त स्वाध्यासापणयं कुरु 281। श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या ध्यात्वा सार्वात्म्यमात्मनः क्वचिदाभासतः प्राप्त स्वाध्यासापणयं कुरु 282। अनादान विसर्गाभ्यामीशन्नास्ति क्रियामुने तदेकनिष्ठया नित्यं स्वाध्यासापणयं कुरु 283। तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थ ब्रह्मात्मैकत्वबोधतः ब्रह्मण्यात्मत्वदार्ढ्याय स्वाध्यासापणयं कुरु 284। अहंभावस्य देहेऽस्मिन्निह शेष विलयावधि सावधानेन युक्तात्मा स्वाध्यासापणयं कुरु 285। प्रतीतिर्जीव जगतो स्वप्नवद्भाति यावता तावन्निरन्तरं विद्वन् स्वाध्यासापणयं कुरु 286। निद्राया लोकवार्तायाः शब्दादेरपि विस्मृतेः क्व चिन्नावसरं दत्त्वा चिन्तयात्मानमात्मने 287। मातापित्रोर्मलोद्भूतं मलमान्समयं वपु त्यक्त्वा चाण्डालवद्दूरं ब्रह्मीभूय कृति भव्य 288। घटाकाशं महाकाश इवात्मानं परात्मनि विलाप्याखण्डभावेन तूष्णीं भव्य सदा मुने 289। स्वप्रकाशमधिष्ठानं स्वयंभूय सदात्मना ब्रह्माण्डं पिपिण्डाण्डं त्यज्यतां मलभाण्डवत् 290। चिदात्मनि सदानन्दे देहारूढामहन्दियं निवेश्य लिंगमुत्सृज्य केवलो भव सर्वदा 291। यत्रैष जगदाभासो दर्पणान्तः पुरं यथा तद्ब्रह्माहमिति ध्यात्वा कृतकृत्यो भविष्यसे 292।